So you train offline, Train offline as in as in मतलब आपने I guess personal training. ACE, हाँ personal training kind of thing. Personal training, yeah, that I've been doing for a couple of years, but that like I was in college as of now. I just finished my fourth year. Okay, BTech, Uh, bachelor's in design, BDes. designing. Okay, Yeah. nice, nice. So you're full time now into fitness training या फिर you So, do this separately? so fitness started as just like a passion sort of a thing where I wanted to Mm-hmm. train myself. So I got certified. I did all of that so I could train myself. Right. And I was taking a bunch of group Okay. X classes. If you heard Right. of Les Mills, I used to take Les Mills at multiple Mm-hmm. places. And then uske baad, uh, Not that much, but definitely Mumbai has a different infrastructure than NCR regarding no, fitness. Delhi NCR mein Les Mills is quite famous. It's more famous over there than it's in Bombay actually. What name did you say? Les Mills. Les Mills. Yeah, Might be. LESMILLS. So it's there in Okay. Fitness First. It's there in a couple of places over there. हाँ, But yeah, fitness so I first तो I started. know. So over there only I used to work, and I used to take classes Okay. over there. Okay. 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 Fitness First, and then Cult also started it, and then I Right. started. Yeah, so उसके बाद skill था, and people wanted training. So I'm like, okay, like personal training wasn't the thing I used to do. I learned हाँ that to हाँ. train myself. I used to do group X classes that I used to enjoy that. And Right. उसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा इधर उधर शुरू किया लाइक आई डोंट डू इट फुल टाइम Okay. Okay. So अभी जैसे डिजाइनिंग खत्म हुई, you just completed your graduation, it is right? हाँ डबल हाँ. ग्रेजुएशन So अभी क्या plan है आगे? You'll go ahead with designing because I personally feel you have a lot of knowledge to survive in this field. सो कि आई लाइक मेकिंग वीडियोज अ लॉट and right. so I want to make videos now. As of now those videos are all in health, so I'll continue staying in Mm-hmm. health, but then I will Okay. start diverting from health also and make videos on other stuff also, because filmmaking is what interests me a lot. ओके ओके ओके. सो फिर अभी जैसे अभी कुछ पता नहीं है, अभी बस ये कर लिया है क्योंकि अपने लिए अच्छा लग रहा था. अभी हाँ फिटनेस में नॉलेज है तो उधर चल रहा है. अभी इट कैन गो टुवर्ड्स एनी साइड. I will. So fitness, so I like it. I love it enough that I'll definitely हाँ हाँ. stay in it. But साथ में I want to go into like videos in general because I love making videos. So because I राइट. सो love making अभी videos, ना. I'm like, इसके बारे में बनाऊं, and that became fitness. So I'll stay in that, but I will like do other things also for sure. राइट राइट. तो जैसे व्हाट मेन स्ट्रीम फिटनेस का डेफिनेशन है अभी इंडिया में, Hmm. that is you must have six pack abs and muscles होने चाहिए and you must be lean and that sort. You are on a completely different side, right? Pretty much. You are into running, cycling and ये सारा कुछ. Hmm. So how does that impact you as a, जब लोग मिलते हैं या कोई भी ऐसे मिलता है, so how does that change? There is that base level of people being like, "Arey, what do you know? You don't have a giant body, six pack nahi Mm-hmm. hai, aisa nahi hai, वैसा नहीं है." I don't like pay much attention to those people in general. And You get them. हाँ, You definitely everywhere. I also used to get this kind of comments. Well, I was working with UFC. तो Okay. जो definitely there were lifters coming to the gym, there were athletes Hmm. coming to the gym. तो जब कोई ट्रायल सेशन के लिए आता था, so one day the just sales person gave me the trial. तो ट्रायल भी नहीं था अभी, तो बस जो इनिशियली जिम में दिखाते हैं कि ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव एंड दिस इज हाउ वी कैन मूव अहेड विद दिस. तो वो चीज थी. तो मेरे को मिला एंड ही ओनली सेड कि सर, इससे बढ़िया तो इनकी, आपसे बढ़िया तो इनकी बॉडी है, इन मैम की बॉडी है, तो आप क्या करवा लोगे? ये भाई तुम मैम से ट्रेनिंग लेके देख लो फिर. जरूरी नहीं है ना कि हर एथलीट तुम्हें अच्छा कोच ही मिल जाए. Pretty much. That I don't think will change anytime soon, at least in India. अभी तो मुझे नहीं लगता. एंड इनफैक्ट आई फील, मतलब मैंने जितना क्राउड के साथ इंटरेक्ट करा है ना, द क्लाइंट्स आई हैव फ्रॉम मुंबई एंड द क्लाइंट्स आई हैव फ्रॉम दिल्ली, मुंबई हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस एज कंपेयर टू दिल्ली एंड क्योंकि यहाँ पे आई गेस की बॉडी बिल्डिंग कल्चर बहुत ज्यादा है. Hmm. मुंबई हैज इट, बट मुंबई में अभी आपको और तरह की चीजें भी मिल जाएंगी. Yeah.
I don't know. I know North India में bodybuilding culture is like the pinnacle in क्रेजी. India. सबसे हाँ. it's सबसे ज़्यादा in North India only. So I'm pretty sure वैसा 100% होता होगा. Bombay में also it's there. 100% is there. It may be, yeah, it नहीं, may be बॉम्बे different. में डेफिनेटली मतलब एथलीट्स तो बॉम्बे में भी हैं, मनोज पाटिल और काफी बड़े बड़े एथलीट्स हैं, राइट. बट मुझे ऐसा फील होता है कि अंडरस्टैंडिंग और जो डिफरेंस पता है ना लोगों को कि बॉडी बिल्डिंग और हेल्थ एंड फिटनेस का जो डिफरेंस है, Yeah, वो नॉर्थ इंडिया में अभी फिर भी कम लोगों को पता है कंपेयर टू मुंबई में जितने ज्यादा लोगों को पता है. माइट बी दिस इज द रीजन क्योंकि आप वहां पे एक्सपोजर ज्यादा है चीजों का, possibly. Who knows? I just know North है ना. India in general has a very bodybuilding culture. हाँ, माइट भी ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ से इट हैज बीन ऑलवेज द पहलवानों वाला साइड रहा है Yeah, यहाँ पे, कुश्ती yeah. वगैरह का और इस चीज का. तो अभी when you what kind of people, like if you want to train someone, right, if you had to get a personal trainer, what would be an ideal personal for you कि मैं इस तरह के इंसान को ट्रेन करना चाहता हूँ. Acha, who do I want to train? हाँ, लाइक जैसे मेरा अभी है कि आई वांट टू फोकस ऑन पोस्टपार्टम वेट लॉस वाले Okay, क्लाइंट्स, या फिर फीमेल्स हु आर वर्किंग फीमेल्स, उनके ऊपर मैं वर्क करना चाहता हूँ मोर, सो दैट आई गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एंड मोर नॉलेज अबाउट दैट. तो व्हाट okay. आर योर. I just like a wide variety of people, so I get to learn more and more with all of them. So right now I'm training a boy who's 16 years old, and I'm training him for the Ironman triathlon. ओके. So within a year ट्रायथलॉन, he'll be राइट. Ironman. So that's what Ironmans are what I typically end up doing. That's swimming, cycling, and running back to back, very, very long राइट, distances. So the events राइट, go on राइट. for 8 hours, 10 hours, 12 hours. Like they are very long ओके, events. So ओके, that is what ओके, I personally do. And I'm training him राइट, for that now. So that's राइट. one person who I'm training. And the other one is a couple who are in the 70s, 72 and 75, I think. So the entire range. So it's like two very different types टोटली of people. ऑपोजिट. Yeah, and then there's someone who's a working man, a regular working man is middle age. So just that I want like a wide variety of people, so I get to learn the most. Of course, athletes के साथ train करने में सबसे ज़्यादा मजा आता है because you can like push their bodies quite heavily and see how they राइट, react. But then the opposite side also exists. Ki the lady could not sit down on the floor and stand up without a lot of pain and without a lot of problems. Now every राइट, session we do that at least 10 to 15 times. So राइट. that is also something which is a lot of fun to do to see how you can हाँ, to get see someone changing and improving at this age is a different kind of feeling, definitely. So both of them, right? I want a like variety of people. राइट, राइट, राइट. तो अभी अगर बात करते हैं कि हाउ डू यू फील दैट इट इम्पैक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन की, मतलब अगर इफ अ पर्सन गेट्स इनटू वर्किंग आउट, हाउ डज इट हेल्प यू विद योर मेंटल हेल्थ, कि आप कितना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा, या फिर किस तरह से आपकी सेल्फ इमेज इम्प्रूव होती है, हाउ हैज इट हेल्प्ड यू ओवर टाइम, या फिर हाउ इज इट हेल्पिंग योर क्लाइंट्स. So I am a big believer that the best way to tackle your mental health is usually physical health. हम्म. For most people, I'm a huge believer of that if you want to improve your mental health, you should definitely start with your physical health because that's so राइट, closely connected to each other. Key they both definitely will go. They will overlap quite a lot. So the reason I राइट, got into Ironman, so Ironman, the one I did was an 8 hour event. So 8 hours राइट. के लिए you swim, cycle, run back to back. You just keep हम्म. going. The reason I got into that was because I googled what's the most difficult thing you can do. An Ironman राइट, supposed to be the most difficult one day event someone can do. So I'm like, chalo karte hai. Because I was very deep into mental health. I want to mentally get as strong as I possibly can. So push राइट, yourself राइट, to the very limit so that you know what you're capable of, and then general things become easier for you to do. So your mental health does not take that big of a drop. So I राइट, personally think that the best one of if not the best one of the most effective ways someone can get mentally healthier is by trying to get physically healthier first, because in that राइट. process only you will learn so much about mental health in general that you will get fitter, at least much more than where you currently are.
So I think physical health though is perfect for mental health. तो अभी जैसे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लाइक वी सी एक्टर्स एंड एवरीवन, सुशांत सिंह का हुआ लास्ट ईयर, एंड वी डेफिनेटली सी हर साल कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, Hmm. राइट? एथलीट्स की भी, जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स या कुछ भी, किसी का भी हम लोग अगर बोलते हैं, सो दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट सीजर्स या फिर ऐसा करके कुछ, Hmm. राइट? व्हाट डू यू थिंक कि इनका क्या फर्क पड़ रहा है सोसाइटी में? कि क्योंकि डेफिनेटली एक ना एक लिमिट पे जाके इट यू नो स्पॉइल्स द इमेज ऑफ वर्किंग आउट, या कहीं ना कहीं कुछ वो होता है, I honestly don't know enough about what's happening in like the bodybuilding industry or the Bollywood industry. राइट? But by the question in general, what I understood is some, even though they are fit, they are still having a lot of problems. हम्म। नहीं तो That was मतलब ऐसा मेरे पास अभी पीछे ना, मैं आई वाज वर्किंग आउट इन हरिद्वार इन अ जिम। तो वहां पे क्या है, हरिद्वार में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, hmm, ठीक है? तो वहां पर जो जिम है, आई स्टार्टेड माई जर्नी देयर बैक इन 2016। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट और सारा कुछ करा। तो वहां पे जिम के साथ मेरा ऐसा रिलेशन है कि अगर जिम खाली हो जाता है तो ऑनर मेरे को चाबी दे जाते हैं कि आप बंद करके उधर दे देना गार्ड को, एंड मतलब आप कर लो। तो आई वाज वर्किंग आउट अलोन एंड दिस hmm. गाय केम, अ फैमिली केम इन। तो उनका लड़का था, आई गेस ही वाज 12-13 years old। सो दे सेड कि हमें इसे जिम ज्वाइन करवाना है ट्रेडमिल पे भागने के लिए। आई वाज लाइक कि सर, ट्रेडमिल पे भागने के लिए आप जिम क्यों ज्वाइन करवा रहे हो? आप बाहर भगा लो इसको, कहीं पर भी रोड पे भागेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ओपन Hmm, एरियाज में ज्यादा अच्छा रहेगा। hmm. ट्रेडमिल के लिए आपको जिम क्यों ज्वाइन करवाना है इसे? Yeah. तो बोलते नहीं, यहाँ पर आएगा तो कुछ वो करेगा। मैंने ठीक है फिर वर्कआउट भी कर लेगा जिम में आके, अगर करेगा ही तो। मैंने नहीं, वर्कआउट नहीं कराना है, Hmm. राइट? तो ये मेंटेलिटी जो है कि वर्कआउट नहीं कराना है, और Yeah. माइट बी नॉट दैट मच इन मुंबई, पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा देखता हूँ कि बच्चे को जिम जाने से रोका जाता है, Hmm. राइट? सो Yeah. व्हाट हाउ डू यू फील कि इस वाले डिफरेंस को हम लोग मतलब what responsibility do we have towards it, and how can it actually be uh, you know deviated कि ऐसा कुछ ना रहे? I mean, it's just this happens everywhere. This is one of like a very common question. Also, DMs में बहुत मिलता है that अरे हाँ parents हाँ। allow नहीं करते जिम जाने के लिए. How can I हम्म। convince them? क्या बोलूँ? I don't really हम्म। have an answer. Just it's a I don't know why it is particularly more common in India. I really don't know. I know कि एक वो myth है India में that if you're 16 or if you're under 18 and you go to the gym, height एकदम shrink हो हाँ, जाएगा. वो ये तो सब है ऐसे ही। have जो parents have. I'm not entirely sure why, but है ऐसे myths. So I हम्म। think the maximum we can do is just educate, because that's what we end up doing. Educate हाँ, the people and the parents as much as we can. Make videos which parents will respond better to. Make stuff that the parents will be better. Which will suit the आई parents. आई फील कि द मोर वी प्रमोट फिटनेस टुवर्ड्स द एल्डर एज ना, कि जब आप अभी जैसे मान लो कोई 30+ इयर्स वाले जो लोग हैं, राइट, अगर हम उनके लाइफस्टाइल में फिटनेस इंडल्ज ज्यादा कर देते हैं, so that they have a proper knowledge of this, आई Hmm. फील कि जो उनके जनरेशन आएगी आज से 5-6-10 साल बाद, जिनके अभी 3-4 साल के बच्चे हैं, उन पेरेंट्स को फिटनेस में इंडल्ज करवा दिया, तो वो अपने बच्चों को ज्यादा अलाउ करेंगे आई गेस कि जाने के लिए, राइट? Definitely. बिकॉज सेकेंड थिंग आई फील इज कि इंडिया में चाइल्ड कोचेस है नहीं, मतलब अभी तो सर्टिफाइड कोचेस है कितने। Hmm. आई डोंट फाइंड टू मेनी पीपल हु आर एक्चुअली एजुकेटेड टुवर्ड्स फिटनेस, True. True. राइट? तो उस चीज को अगर थोड़ा बहुत, अभी तो पहले तो कोचेस को ये एजुकेट करना पड़ेगा कि ठीक है तुमको ये करना पड़ेगा ताकि तुम Hmm. आगे बढ़ पाओ। अभी आई नेवर मेट अ पर्सन जो छोटे बच्चों के लिए, मतलब एक होता है ना जैसे बाहर के, आई आई फॉलो अ लॉट ऑफ कोचेस फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि एक मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता नाम का, बट पेरियरा एथलीट एलीट परफॉर्मेंस करके कुछ है, राइट? सो ही इज अ परफॉर्मेंस कोच, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कोच, Okay. परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाने पे। तो उनके यहाँ बैचेस होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, 8 years 10 years,
12 years कि आपकी एजिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इंडिया में आई डोंट थिंक कि ऐसी कहीं पर भी कुछ भी क्लासेस हो रही हैं। Yeah, it's doubtful. It's not common. उसके लिए तो multiple reasons also, but biggest reason I would say India में poverty is very high. So India में people willing to pay a coach in the first place are very few. राइट। उसमें अपने बच्चे के लिए पर्सनल ट्रेनिंग लो इज इवन रेयरर बिकॉज पेरेंट्स खुद ट्रेनिंग नहीं लेंगे बिकॉज टू एक्सपेंसिव और व्हाटएवर इट्स इधर तो डॉक्टर के पास जाने के लिए यू थिंक ट्वाइस कि अरे नहीं जाते डॉक्टर के पास 1,000 रुपए बच जाएंगे हाँ सो वो हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते उधर से पर्सनल ट्रेनिंग पे आओगे उसके बाद बच्चों का पर्सनल ट्रेनिंग कराओगे सो आई थिंक इट्स क्वाइट फार इनटू द फ्यूचर कि बच्चों का पर्सनल ट्रेनिंग विल बी कॉमन हियर पहले ट्रेनर्स भी नहीं है बट पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे जाने के लिए हाँ मे बी। नहीं बट Yeah. आई फील कि अगर थोड़ा कुछ ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो सकती है ना, जैसे पेरेंट्स आर एक्चुअली, जो पेरेंट्स मैं देखता हूँ कि मिडिल क्लास पेरेंट्स जो हैं जो शायद अपने लिए नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं अभी, बट दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्केटिंग क्लासेस या कराटे क्लासेस में या इन तरह की क्लासेस में वो लोग भेज रहे हैं। सो बट कोई भी ना इन चीजों पे फिटनेस के ऊपर अगर किसी को करना है, किसी को मान लो अगर किसी के स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाने के ऊपर करना है, तो उसके ऊपर कोई नहीं भेज रहा है। आप 4 साल 5 साल के बच्चे को क्रिकेट कोचिंग करवा लोगे, Hmm. राइट? आई हैव सीन किड्स ऑफ 7 8 years गोइंग, वो पूरा किट बैग टांग के और Yeah. पूरा वो वाइट यूनिफॉर्म पहन के आप बाहर जा रहे Mhm. हो, आप बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा है। बट कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मैंने ना अभी जब व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन यूएफसी, एक क्लाइंट ट्रायल के लिए आए थे, ठीक है? तो ट्रायल उनका किसी और ट्रेनर के साथ चल रहा था। सो शी हैड अ बेबी, तो मैंने Okay. उसको थोड़ा बहुत ऐसी एजिलिटी ड्रिल्स, मतलब मैं खाली था उस टाइम पे, माय सेशन Hmm. वाज आफ्टर हाफ एन आवर, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कोन्स वगैरह लगा के, मैं ठीक है रन लाइक दिस, जिगजैग इसमें भागो एंड सारा कुछ। तो उस चीज को भी आई डोंट थिंक दे रिस्पॉन्ड वेरी पॉजिटिवली अबाउट दैट। Hmm. मतलब बच्चा बाहर भी यही करता है, अब क्योंकि Yeah. बाहर भी नहीं कर पा रहा है, अब बाहर भी नहीं जाने देते, अब बच्चा फोन में लगा पड़ा है, सारा कुछ कर रहा है। एंड उस चीज की वजह से आई फील कि आने वाली जनरेशन की हेल्थ बहुत ज्यादा उस पे है। मतलब मैं जैसे था, आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू यूजिंग माय पर्सनल फोन, हैविंग माय पर्सनल फोन इन 11th क्लास Hmm. 2013 में, Okay. राइट? एंड आई एम सो एडिक्टेड टू द फोन राइट नाउ कि अभी बिना फोन के अगर 2 दिन जिंदगी काटनी पड़े तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी चीज फोन पे ही चल रही है, Yeah. राइट? इंस्टाग्राम फोन पे चलता है, वर्क फोन पे चलता है, कॉल्स फोन पे होती हैं, क्लाइंट्स मैनेज फोन पे होते हैं। तो Hmm. उसके बिना, बट अगर किसी बच्चे को अभी से मतलब फिजिकल एक्टिविटीज की आदत नहीं रही है, उसे नहीं पता कि बाहर जाके बच्चों के साथ बर्फ पानी खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, छुपन छुपाई खेलना क्या होता है, Hmm. बिकॉज पबजी वाला टाइम आ गया, Yeah. राइट? तो उसका भी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा Definitely. वो इसका flip है, side राइट? भी है. I would say इसका flip side भी है that every passing generation is getting fitter. Like health is getting more mainstream every हम्म। generation you go. So I know what you're saying कि वो phone पे रहते हैं, they are playing games हम्म। on whatever devices all the time. Completely agreed. But साथ राइट। में you are also seeing that every generation, every fitness is getting more mainstream every year now. राइट। And बट with every वो generation, इसलिए है people ना are getting बिकॉज fitter. अभी तो वी आर गेटिंग इनटू यंगर एज, अभी तो हम Hmm. लोग बड़े हो रहे हैं, Hmm. राइट? आई गेस यू आर समवेयर अराउंड 21 22, 23 है now. ना? 23 नाउ, आई एम 24 राइट नाउ, आई विल बी 25 इन सितंबर। तो अभी तो हम Okay. लोग मेन उसमें आ रहे हैं जहां आप मेन स्ट्रीम जनरेशंस को देखते हो, Hmm. राइट? ठीक है, जो बच्चे थे जो जब हम लोगों ने कॉलेज स्टार्ट किया या हम लोगों ने जब वर्कआउट स्टार्ट किया, देवर 13 12 13 14 years old, तो उनके लिए ठीक है, फिर भी हम लोग आइडियल्स हो सकते हैं कि ठीक है कुशल भैया ने ऐसा करा, या शुभ भैया, ठीक है शुभ भैया ट्रायथलॉन कर लेते हैं, आई ऑल्सो वांट टू डू इट। तो अभी वो माइट भी इस चीज में इंट्रोड्यूस होंगे, Hmm. राइट? बट जो बच्चा, जिस क्योंकि उन्होंने हमें देखा, माइट भी क्योंकि उनके पास उस टाइम वो गैजेट्स नहीं थे या कुछ नहीं थे, बट जो पिछले 2 साल में चेंज आया, Hmm. राइट? आई हैव पर्सनली फेल्ट, क्योंकि आई एक्सपीरियंस्ड टीनेजर्स कमिंग टू द जिम, वर्किंग आउट एंड एवरीथिंग मोर देन दिस। लाइक अभी जो रेशियो है
उससे पहले रेशियो बहुत ज्यादा था। अभी आई फील पीपल कॉलेज में जैसे मैं जाता हूँ ट्रायल्स के लिए, ठीक है, या स्पोर्ट्स के लिए, सो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, हमारी फर्स्ट ईयर की स्पोर्ट्स टीम में अराउंड 250 बच्चे थे, Okay. राइट। एंड व्हेन आई अभी लास्ट ईयर में गया था जब ट्रायल्स के लिए, आई यूज्ड टू प्ले शॉट पुट, और मैं ट्रायल्स के लिए गया था तो 250 बच्चों के टोटल ट्रायल्स भी नहीं आए थे फर्स्ट ईयर से, Okay. राइट। सो दे आर नॉट Hmm. गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स, दे आर नॉट गेटिंग इनटू सोशल एक्टिविटीज। छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो जाती है, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, फर्स्ट ईयर का बच्चा था, उसकी गर्लफ्रेंड से कोई 2-3 लड़के बात करते होंगे, उसने जाके उन तीनों में चाकू मार दिया। Okay. अब ये चलो ठीक है, फ्लिप साइड है, माइट बी ऐसा हो कि माइट बी आई एम रॉन्ग, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू बी रॉन्ग इन दिस, कि हर जनरेशन शायद हेल्दियर ना हो आगे आगे, Hmm. राइट, बट ये एक इफेक्ट तो आ रहा है ना। दोनों दोनों साथ में हो रहे हैं। आई हैव टू एग्री कि व्हाट यू आर सेइंग इज हैपनिंग, नो डाउट अबाउट हम्म। दैट, हाँ। बट साथ में एवरी जनरेशन इज गेटिंग richer and every generation is getting healthier. And हाँ। if you notice, Western countries usually have the healthiest culture. Typically, they are supposed to be हम्म। healthy. Most of the Western countries are much more healthier than the developing इंडियन। nations. या। Any developing nation that way. And हम्म। as we are also climbing up the economic लैडर। hierarchy in the world, as we are also climbing up, we are seeing more and more resources being put into health. अभी पैसा आ रहा है राइट। तो हेल्थ पे यू कैन स्पेंड मोर मनी, बट इफ यू आर समवन जिसके पास मंथ एंड के बाद पैसा बचता नहीं है, देन आई डोंट थिंक यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट हेल्थ. So I think what you are saying is happening. There's a bad part of what's happening, and then there's the हम्म। good part. As people are getting richer, as people are learning more by social media, they are also trying to get healthier. वो एकदम छोटे बच्चे शायद नहीं कर रहे होंगे, I'm not aware, but I do see every year कि health is getting more and more popular. It's हाँ। not, it's quite cool to be healthy now. Like it's getting to a point that you want to go to the gym, you want to do all of that. राइट, राइट, राइट। हाँ, ये भी एक फैक्टर है कि अभी ना इट्स द बीइंग फिट इज बीइंग द डेफिनेशन ऑफ बीइंग कूल। Yeah, that's also happening now. It's not only big body also. If you see like runners, if you see marathon हम्म। ke numbers, every year the number of people attending a marathon is increasing very, very rapidly. Cycling, if you see abhi pandemic ke baad, the cycle ka industry has boomed so severely because everyone wants to buy a cycle. हाँ। And cycle कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है खरीदने के लिए, because it's always sold out. So I राइट, do राइट। see, yeah, the flip side is there. The bad part is 100% there. But then this is making me hopeful that more people are running marathons, more people are cycling, more gyms are opening, more gyms are full all the time. हम्म। So I do see the other side also. And cult, if you see cult, for example, हाँ। हाँ। in such little time, पूरे इंडिया में सब जगह फैल हाँ। गए, and the classes are like half of the classes are full all the time, and they don't focus on like bodybuilding only. I don't think they have any bodybuilding classes at all. आई डोंट थिंक दे, मतलब अभी तो आई केम टू नो कि उन्होंने जो एक पर्टिकुलर अपना जिम होता है ना, कि व्हाट कल्ट वाज डूइंग वाज इट वाज एक्वायरिंग जिम्स अराउंड द कंट्री, कि Yeah. आप फ्रेंचाइजी ले लो या पार्टनरशिप में ले लो, बट अभी Hmm. लखनऊ में दे हैव कम अप विद देयर ओन जिम, द फर्स्ट कल्ट जिम दैट इज, वो कि बॉम्बे में जिसमें सबसे आप पहले था. बॉम्बे में था। I was part of them. जब ये वो अच्छा। transition हुआ, I was working over there only. ओके, 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 आई वाज नॉट बॉम्बे. अवेयर, मतलब मेरे को लखनऊ में पहला सुनने में आया कि जिसमें अच्छा. प्रॉपर वेट ट्रेनिंग एंड सारा कुछ है, सो इट हम्म. वाज लखनऊ, सो माइट इट बी इन बॉम्बे। तो वो चीज आई है डेफिनेटली। और आई फील इज कि जब से अभी जैसे यूएफसी आ रहा है, हम्म. राइट, यूएफसी स्टार्टेड इन बरेली, देन इन दिल्ली, देन इट स्टार्टेड इन नोएडा, रिसेंटली इट ओपन इन बैंड्रा, आई गेस बैंड्रा में ओपन हुआ है। I'm not aware. I'm not aware. हाँ, सो मार्शल आर्ट्स भी इज अ थिंग दैट इज बिकमिंग, Yeah. mainstream. So what do you feel about martial arts becoming a, you know, sport in India? Because बाहर एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा स्पोर्ट है। Hmm. कॉनर मैग्रेगर was the highest earning athlete in 2020 and Yeah. 2021, Yeah. right? तो how do you feel that Indian martial artists का future अभी कैसा है? I am to like a huge die-hard fan of I don't watch martial arts, but I'm a huge हम्म। fan. And one of my goals after finishing college was that I want to join martial arts.
like get Okay. a very good coach for it and join it myself because I'm a huge fan. Mhm. I don't watch any Right. martial arts. I'm not interested in watching it. Mhm. But I do see, they say F1 a couple of years ago, F1 in India was not famous at all. And now Mhm. every person I know is watching F1 ka every race and following every race. Similarly, I'm seeing Mhm. that with UFC. Every year, more and more of my friends are talking about UFC. More people I know are talking about UFC, watching the matches, Mhm. wanting to see this, being fans of MMA, all of that. So I'm pretty Right. sure that will also take off similar to F1, how F1 just took over India. Similarly, I think UFC also will take over. And UFC famous हो गया मतलब everyone wants to learn it. So more and more people will try learning it. Right. So अभी अगर if you get into martial arts training and सारा कुछ, do you plan to get into fights properly, like एक mixed martial No, art fighting या उसमें कुछ भी no. I'm boxing या not कुछ interested भी? in fighting. I'm interested in learning the skill कि कभी कोई problem हुआ मेरे साथ, then I can escape. I'm not interested in fighting at all. I'm So not you like you you were something looking for a self defense kind of thing. yeah, I just want that skill. I want to acquire the skill of martial arts because healthcare मामले में it's very the kind of Hmm. different things your body has to do to be a good martial artist. मतलब you Right. are getting very fit doing it. So fitness तो Hmm. anyways आ गया. Fitness के बारे में कोई doubt ही नहीं है. साथ में you now have a skill to defend yourself in any situation ever. Right. So it's just skill wise मेरे को करना. I don't want to fight with people. That's the But last thing. personally, what I feel is that if you, Abhi, definitely you don't have a plan, but if you get into fighting na properly, you'll be a great fighter because you have a better mental toughness than any other person. Possibly. राइट किसी भी एक एवरेज पर्सन से आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी है, मेंटल टफनेस बहुत अच्छी है, एंड मोर ओवर जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसमें चाहिए होते हैं, स्टैमिना, राइट, दैट इज वेरी गुड. तो इफ यू बिल्ड पावर एंड एवरीथिंग जो Hmm. उसमें चाहिए, सो यू कैन बी अ ग्रेट फाइटर इन द फेदर वेट कैटेगरी या इस टाइप पे. Possible. Who knows? I guess we'll never find out. Might be, And, you can never say never about that. yeah. See, an important part of martial arts training is sparring. Yeah. So sparring अगर होगी, and if you get into sparring, might be you develop a interest of fighting, and Possible. Possible. possibly Very I see unlikely, but possible. after 5 years or 10 years, I see you in some stage, some octagon of UFC or somewhere, one Who knows? championship, We'll see. देखते हैं. right? अभी तो So कोई प्लान नहीं है. हाँ, so अभी चलो ठीक है, triathlon is one thing. Is there any other sport that you like, being कि ये वाला sport मेरे को खेलना बहुत पसंद है? Just to play it for enjoy, like fun purposes, basketball is my favorite. I've been playing basketball. I don't play good. I'm not a good हम्म. player, but I love playing basketball. यार मेरे को ना कभी जिंदगी में बास्केटबॉल खेलना नहीं आया. I've मेरे को भी नहीं played आता. rugby, I've played football, I've played a lot of games. मतलब जितने भी गेम्स हो सकते थे स्कूल में, मैंने सब चीज खेली है, वॉलीबॉल, कबड्डी. मैं बास्केटबॉल जिंदगी में बस एक ही मैच खेल पाया हूँ आज तक, जो मैच बोलते हैं ना जिसको, हम्म. एक ही खेल पाया हूँ, क्योंकि उसमें भी इतना था कि मेरे को मुश्किल से मेरा ऑन फील्ड टाइम 2 मिनट रहा होगा, क्योंकि इतने फाउल हो रहे थे, इतने हम्म. फाउल होते हैं उसमें. आई वॉज लाइक भाई कोई सब्स्टिट्यूट भेज दो, मेरे बस की नहीं है ये चीज खेलनी. हम्म. बॉल को एक हाथ से डब्बा खिला दो तो फाउल है, दो हाथ से खिला दो तो फाउल है. पता नहीं क्या कुछ होता है इनका. देयर इज समथिंग समथिंग की, मतलब फिर किसी ने मेरे को बताया था कि देयर आर सम अराउंड 200 टाइप्स ऑफ फाउल्स इन द गेम, अगर आप I रूल बुक didn't. पढ़ते I हो. did not know that. मेरे को, I never knew that. हाँ कभी, मतलब इफ यू प्ले इट विद अ प्रोफेशनल ना, तभी पता चलेगा. मैं बॉल हम्म. लेके, मेरे पास बॉल आती थी, कहते फाउल है, बॉल आती थी फाउल है. एंड आई वाज अ रग्बी प्लेयर, सो आई गॉट एग्रेसिव, मैंने एक को कंधा मार दिया, वो गिर गया. Foul. उसके बाद फाउल है, फिर मैंने बोला भाई मेरे को मत खिलाओ, ये गेम मेरे लिए नहीं है. हम्म. जस्ट बिकॉज मैं हाइट में 6 फुट का हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, Yeah. राइट. तो बास्केटबॉल के बाद अभी व्हेन यू डन विद योर कॉलेज, या कॉलेज में कोई स्पोर्ट खेलते थे? No, there was no sport in बास्केटबॉल my ही. college. अच्छा, ये भी चीज है, मुंबई हैज अ डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम देन नॉर्थ इंडिया. क्या फर्क है? मतलब हमारे यहाँ पे 11th 12th होता है, वहाँ पे आई गेस सीरियसली प्री नहीं कॉलेज लगा. बोलते हैं.
No, it's 11th 12th only here. नहीं, मैंने बहुत जगह सुना है, मतलब मैंने एक दो क्लाइंट्स से अगर मैंने पहले बात करी स्टूडेंट से, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग प्री कॉलेज में है, या प्री कॉलेज बोलते हैं या प्रिपरेटरी कॉलेज, कुछ ऐसा करके बोलते हैं 11th 12th को, कि साइंस That कॉमर्स हमने लिए। that must be so. There are many boards over here, and international boards are very famous here. So IB, IGCSE, ओके। they are the two bigger international boards. And हम्म। उसमें IGCSE में 11 12 को you call A levels. You don't call राइट। it 11 12, you call it A levels. And हम्म। IB का I'm not sure what you call it. IB must be pre-college. I'm not sure. उसका 11 12 it's 2 years only, but it's just called something else probably. I'm not aware. हाँ, मे बी। Because मेरे college में सो था, I had many friends from IB. So they used to ओके। call it something. I don't remember what. I was in ISC. So ISC में it was normal 11 12. ओके। सो व्हाट वाज योर स्ट्रीम? कॉमर्स, साइंस? Science. Science. सो योर नेवर, पेरेंट्स नेवर आस्क्ड यू टू गो फॉर इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर या ऐसा कुछ? No, not really. मेरे घर पे डिस्कशन अलग था. I didn't want to continue education after 12th. So ओके। मेरे घर पे ये नहीं था कि अच्छा तू इंजीनियरिंग पढ़ ले. मेरे घर पे it became कि प्लीज कुछ पढ़ ले तू. तो तो भाई पढ़ना क्यों नहीं था? 12th के बाद क्या हुआ था ऐसा? So for many years, Nico, after like from I would say 10th itself, I didn't like the education system at all. हम्म। And तब से I'm like Nico नहीं पढ़ना है. Like I हम्म। wanted to learn. I really love learning stuff, but I hate how they are making us learn stuff. So 10th से राइट। only I was like I don't like this at all. 11th 12th में I did science, and that time in 12th, so I had a very set plan that time in 11th 12th ki I'll study for 2 years over here, and then I will हम्म। apply US or Canada or UK or some country I will हम्म। go, and I will do computer science, because in 11th I was introduced to computer science. I was great at it and I loved it. I absolutely loved computer science. कोडिंग And then I टाइप ऑफ was थिंग? doing this, huh? कोडिंग टाइप ऑफ थिंग, कोडिंग स्टफ, Coding. सी Yeah, लैंग्वेज? I used to like absolutely love coding, and I was really good at it. And I was doing some online courses, and those courses were going much faster than my school was. ओके। So वो कोर्स में कुछ 4 weeks में I had finished 11th and 12th दोनों का portion, 4 or 5 weeks में. ओके। So, and this was when I was in 11th. So then when I got too frustrated, two things हम्म। happened. One was I was in 11th, I was solving problems, and I was solving it in a better manner, because there are many ways to solve problems in coding. I हम्म। was solving it in a much better manner. My teacher was very understanding. My teacher was really good. She told me हम्म। that what you're doing is correct, what you're doing is better, but boards में तू ये लिख के आएगा तेरे को marks नहीं मिलने वाले. So I can't give you marks for it. So even though I was doing everything right, 1 + 1 का आंसर 2 ही था, 2 ही आया हम्म। मेरे को, but मैंने अलग तरीके से वो आंसर लाया. So she's like, I know what you're trying to say, but I can't give you marks because boards में marks नहीं मिलेंगे. That was one thing that राइट। pissed me off. Second was, if I wanted to continue computer science in India, I had to give JEE or one of those entrance tests, one of those many entrance हम्म। tests. Entrance test में they see how you are in every subject, but not computer science. So to get into computer राइट। science, in IIT for example, I had to be the best in physics, chemistry, and math. मैथ्स, राइट। In IIT Bombay, I didn't want to leave Bombay, so if I had to get into IIT Bombay, it was that I had to be in like the top 100 ranks or something for computer science in IIT Bombay. ट्रू। So they don't care अगर मेरे को computer का C आता है या नहीं. They want to know if मेरे को chemistry आता है. So that was the other thing that ticked me off too much. राइट ना, इट इज अ प्रॉब्लम, मतलब आई ऑल्सो फेल्ट, दो आई वॉज नेवर वेरी स्टूडियस, मेरे को कभी, आई वॉज बेयरली अ सर्वाइवर इन 11th and 12th, मतलब 12th में पास रिजल्ट आया था तो घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा, Okay. क्योंकि आई वॉज सो बैड एट स्टडिंग। मेरे 11th के अगर आप फाइनल्स निकाल देते हो ना, तो 11th में वीकली टेस्ट होते थे, एंड बोर्ड्स, प्री बोर्ड, सारा कुछ मिला के भी, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स you won't find a total of 50, Okay. right? If the denominator would be 1000, the numerator would be somewhere around 50 only. Wow. I Okay. was so that bad at studying. But उसके बाद फिर पापा ने बोला इंजीनियरिंग कर ले, एंड उस टाइम ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, पता भी नहीं था करना क्या है, ठीक है, क्योंकि एक तो ना, आई गेस यू आर 2 years younger to me, so by the time you got into 11th and 12th, या तो उस टाइम पर फिर भी थोड़ा बहुत इंटरनेट का एक्सपोजर आ गया था चीजों पे,
राइट, 3G केम इनटू प्ले, मोर ओवर Yeah. 3G आ गया था हमारे टाइम पे। 2G होता था, 2G और 3G आया भी था, तो उसमें वो रिचार्ज होता था 98 रुपीज का, हम लोग 1 GB खरीदते थे उस टाइम पे। और डोकोमो बहुत सस्ता होता था, तो इंटरनेट का, तो इंटरनेट से पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं था कि तुम इंटरनेट से कुछ पढ़ लोगे। आई गॉट टू नो अबाउट दीज थिंग्स कि ठीक है, ऐसा भी कुछ करियर हो सकता है, फिटनेस ट्रेनिंग में भी कोई करियर बन सकता है। मेरे हिसाब से ये था कि यार ये तो काम इनका कुछ और होता है, कोचेस का ही तो शाम को टाइम पास करने के लिए हमें कोचिंग देने आ जाते हैं, ठीक है। तो हाँ. मेरा वो था। बट देन व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज इन 2016 आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। कॉलेज से पहले आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, फिर उसमें इंटरेस्ट बनता गया। देन आई गॉट दिस एनकाउंटर की फर्स्ट ईयर मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया कॉलेज में, राइट। जस्ट अ सेकंड। Yeah. सो हॉस्टल का जिम था, हॉस्टल के जिम में आई यूज्ड टू वर्कआउट। तो वहां पे एक होता है कुएं का मेंढक था मैं उस टाइम पे, no exposure to the outside world, and at that time Guruman and Jeet Salal were taking a boom in the fitness industry. तो इन लोगों को देख देख के I started working out, ठीक है, सारा कुछ चलता था। The moment in the second year when I stepped out of hostel, I took a flat outside. I went to a local gym. वहां पे जाते ही he was like ऐसे करके मेरे स्किन फोल्ड पकड़ा, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा, बनवा देंगे, बॉडी बनवा देंगे। 2-3 फोटोज दिखाए ऐसे एथलीट्स के, 6 महीने में ऐसा कर दूंगा। एंड करना क्या है, ये मेथनॉल की गोली है, ये लेनी है, ये लेना है, ये डायनाबॉल है, ये है, हरी गोली पीली गोली करके, एंड की 12,000 रुपए तुम्हारा महीने का खर्चा बैठेगा, एंड 3,000 रुपए मेरी फीस रहेगी महीने की, प्लस जो भी तुम्हारा खाने पीने का रहेगा वो अलग रहेगा। मैं उसने मेरा मोटा मोटा उसने 20-22 हजार का मेरा वहां पे हिसाब बिठा दिया, ठीक है, जिसमें जिम की फीस 500 रुपए अलग थी। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे घर से आते केवल 5,000 रुपए हैं, अब मैं ये 22,000 रुपए मैनेज कैसे करूंगा, क्योंकि Yeah. बॉडी तो बनानी है ना, बॉडी बनानी है क्योंकि फिट दिखना है, वो चीज Yeah. करनी है। फिर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर करना शुरू करा, राइट। फिर बीच में जब 2 महीने मैंने कैरी आउट करा, मैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं गोलियां वगैरह नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। देन आई फेल इनटू द ट्रैप की मैंने एक बार बोल दिया, उसने बोला कि डायनाबॉल ले लो साइज अच्छा हो जाए, मैंने बोल दिया ठीक है डायनाबॉल आप मेरी मंगवा दो, ठीक है, वो डायनाबॉल आ गई मेरे पास। बट द गुड थिंग वाज कि फिटनेस मेरे लिए एक ऐसी चीज थी कि मैं रिसर्चेस करता था चीजों के बारे में, ठीक है। तो मैंने रिसर्च करना शुरू करा, डायनाबॉल हाउ डज इट वर्क, ये सारा कुछ। तो सिक्स पैक, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, सिक्स सिक्स पैक करके है, एक धमन सिंह करके यूट्यूबर है, Yeah. राइट, ही पुट्स आउट रियली गुड कंटेंट, ठीक है। तो What's his name? उनकी सिख दमन सिंह करके, सिक्स पैक, सिख होते हैं सिख, Okay. एस Okay. Understood. पैक। Understood. तो ठीक है, Okay. तो उनका मैंने देखा एक वीडियो, एंड ही सेड कि स्टेरॉइड्स का ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये आपके लिवर फेल हो सकता है, ये सकता है। मैंने वो 700 रुपए का वो खरीदा था उस टाइम पे, एक पूरा पत्ता आता था उसका Okay. डायनाबॉल का, वो 700 रुपए का खरीदा था। आई आई थ्रू इट राइट अवे, मैंने रिफंड का भी नहीं सोचा, मैं रिफंड का बोलूंगा ये फिर मेरे को फोर्स करेगा, मैंने वो जिम भी छोड़ दिया, ठीक है। एंड देन आई वेंट बैक टू माई हॉस्टल जिम, और रोज फिर होता क्या था, क्योंकि पैसे बचाने थे डाइट के लिए, तो आप 20-20 रुपए बचा के फिर काम करते हो कि ठीक है ऑटो के 20 रुपए बचा के आई फोकस ऑन माई डाइट की, ठीक है इतने का चिकन आ जाएगा, चिकन वुड हेल्प। Yeah. तो वो चीज करता था। सो आई यूज टू वॉक डेली फॉर 7-8 किलोमीटर्स टिल माई फ्लैट, और वो करते करते अब मेरे को ये नहीं पता था कि एक पोस्ट वर्कआउट अच्छा कार्डियो हो जाता है। Yeah. तो पोस्ट वर्कआउट कार्डियो हो रहा है वो मेरा, और मेरे को पता नहीं चला, करते करते आई गॉट सुपर लीन इन दोज 4 months ऑफ ड्यूरेशन, बहुत लीन हो गया उस टाइम पे। अब जब थोड़े दिन बाद फोटो खींचा ना, ऐसी सेल्फी लेने गया, अरे यार एब्स वैब्स दिखाई दे रहे हैं क्लियर बहुत ज्यादा। फिर देन आई Yeah. स्टार्टेड मोर स्टडीइंग मोर अबाउट इट, स्टार्टेड श्रेडिंग वेट, फिर थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा। अब थर्ड ईयर आते आते आई वाज, मतलब एक एवरेज बंदे से बहुत ज्यादा नॉलेज थी। तो उसके बाद आई गॉट इनटू कि ठीक है कुछ करना है। थर्ड ईयर खत्म हुआ, सो आई वेंट फॉर अ जॉब इन मानेसर गुड़गांव। वहां पे 2 महीने करा, नहीं सूट करा, वापस आए। फिर सोचा कुछ और करना है, जॉब नहीं करनी, लेट्स ट्राई वर्किंग आउट
लेट्स ट्राई वर्किंग आउट एज अ फिटनेस ट्रेनर, ट्राई करते हैं। 2020 में शुरू करते ही लॉकडाउन लग गया। Yeah. बट लॉकडाउन ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि लॉकडाउन में आई स्टडीड फॉर एस, दो मैंने एस का एग्जाम कभी नहीं दिया, बट आई Hmm. स्टडीड फॉर एस, और एस पूरा पढ़ने के बाद आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और पता चला कि एक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग से कितना अलग चीजें हो सकती हैं, Hmm. राइट। अब जब ये चीज हो गई, ये सारा कुछ हो गया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग मोर डीपर इनटू इट। मैंने फिर एस में सीईसी क्लब ज्वाइन किया, स्टडीड डिफरेंट थिंग्स, और छोटे मोटे सर्टिफिकेशंस करे। अभी रिसेंटली आई डिड अ सर्टिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज आई फील कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है इस टाइम लोगों की। Hmm. माइट बी इसकी वजह से, या डाउट्स, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स, लॉकडाउन हो गया, लोग घर में Hundreds of बंद हो, reasons. हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। नहीं, आई फील कि लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा टोल हो गया Oh, मेंटल हेल्थ पे ना, definitely. No doubt. क्योंकि 100%. पीपल आर ऑल द टाइम, दे आर ऑल द टाइम वर्किंग, Hmm. True. राइट। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब वो काम नहीं कर रहे। Yeah. एंड एक ना सूडो एंटरप्रेन्योर वाला फील लेने के लिए ना, आई फील, Hmm. क्योंकि मैंने ये चीज बहुत टाइम तक करी, आई वॉज प्रिटेंडिंग दैट आई वॉज वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई वॉज Hmm. एक्चुअली नॉट। Yeah. ठीक है, जो एक होता है ना प्रोडक्टिव टाइम, मैं नहीं निकाल रहा था, आई वॉज Hmm. जस्ट किलिंग टाइम एट दैट टाइम। जो Hmm. चीज मैं Yeah. 20 मिनट में कर सकता हूँ, मैं किसी और टाइम में कर रहा था। तो वो चीज की वजह से भी बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ का वो Yeah. मतलब इम्पैक्ट पड़ता Definitely. है, राइट। एंड उसकी वजह से जब आपका करियर स्ट्रगल करने लग जाएगा ना, यू Hmm. गो इनटू अ स्टेट की जहाँ पे आपको मतलब वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, Yeah. राइट। सो क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि हाउ ऑफन डू यू एनकाउंटर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस स्टेट ऑफ कि मेंटल उस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। Oh, every day. 100, like every single day. And I was in design college. हम्म Design college mein people are more artsy and yeah, they're just more artsy and they're more creative. हम्म And with creative people, they tend to show their how they are feeling more outwardly राइट compared to other people. Like other people hold it in too much. Design हम्म में they are more, they show कि कैसा लग रहा है हमें. So in राइट design college, it was like everywhere, absolutely like if there are 100 people in the class, 98 of them openly say, talk about it, everything, all the time. So with राइट me, at least my encounter with in my college was very openly कि we all are having proper mental issues. I'm pretty sure दूसरे like education fields में it must be much lower. But in my college, so I had everyone, every single person. राइट। बट मतलब कभी ऐसा हुआ है यू ट्राइड टॉकिंग टू अ फ्रेंड अबाउट कि यार ठीक है, आई माइट बी अ बिट स्ट्रेस्ड, या मैं थोड़ा सा ना परेशान हूँ दिमाग को लेके, एंड देन उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आया हो कि अरे यार ये क्या है, ये सब कुछ नहीं होता, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। No, so luckily, the college I have gone to, the people I have been around, they all are very mental health forward. Even my college professors, everyone. But then my college is a very new niche college, design ka hai. So it's a different industry altogether. It's not a typical Indian college ka scene. Very different, very, very different than typical Indian college. राइट। सो So, हाउ वाज योर कॉलेज एक्चुअली, मतलब क्या पढ़ा, डिजाइन में क्या पढ़ा आपने? so graphic design is a big part. Branding is another ओके, big part. Animation was a small part. So ये सब आई पढ़ा फील मैंने. दैट इज द रीजन योर इंस्टाग्राम लुक्स सो गुड। Thank you. I don't think it looks that good though. No, What I time? है personally feel the thumbnails that you put out with your videos, na, they're really attractive. Okay. Thank you. Thanks a I lot. I found out your video, मतलब I don't remember the name. I saw your one of your YouTube videos. Okay. ऐसे scroll करते करते, so it was podcast. I was searching for कि fitness podcast इंडिया में कोई कर भी रहा है या नहीं। Mhm. ठीक है, so I guess अक्षय नाम है उनका, अक्षय आकाश नाम है, I योर don't know. फिटनेस कोच या करके, यू हैड अ No fitness पॉडकास्ट coach. विद, No, Sanjay. हाँ Sanjay. संजय। सो उनके Sanjay. साथ जो आपका वीडियो था वो चीज मैंने देखी, Hmm. देन आई वेंट टू योर इंस्टाग्राम बिकॉज आई फाउंड योर ये काफी शुभ वाला जो था ना, ये आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि यार ये Hmm. कुछ डिफरेंट यूजर नेम है, तो आई सर्च इट ऑन इंस्टाग्राम। द मोमेंट आई वेंट इनटू योर प्रोफाइल, द
thumbnails were so attractive. मैंने खोल के देखा सारा कुछ, and Hmm. इंडिया में ना 95% ऑफ फिटनेस इज बुलशिट. Hmm. इंस्टाग्राम पे तो जो आपको मिल रहा है 95% वो बेकार है, Yeah. राइट? एंड इट इज वेरी रेयर दैट यू फाइंड समवन जिसके थॉट प्रोसेस से आप रिलेट कर पाते हो कि यार ये बंदा एक्चुअल में कुछ सही बात बता रहा है, Hmm. राइट? फॉर एग्जाम्पल तरुण गिल एक बहुत बड़ा वो नाम बना इनिशियल जब Hmm. फिटनेस यूट्यूब शुरू हुआ 2015-2016 में. तरुण गिल एक बहुत बड़ा नाम बना. नाउ द पीपल हु फॉलो हिम, अभी के अगर उनके मैं कंटेंट की बात करता हूँ ना, सो एक्सरसाइजेस के फॉर्म्स बेकार हैं, साइंस बैक्ड कोई चीज नहीं है, साइंस बैक्ड कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है. सो उस चीज की वजह से भी बहुत ज्यादा मतलब एक मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात हो जा रही है. Hmm. सो दैट्स व्हाट लेड मी टू ठीक है यार, मैसेज करता हूँ उनको, बिकॉज Yeah. आई वाज टेक्सटिंग पीपल कि ठीक है लेट्स कोलैब, लेट्स ब्रिंग देम ऑन टू द स्टेज. एंड तो मैंने मैसेज करके देखा, लकीली यू रिस्पॉन्डेड, Hmm. एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन. बट Yeah. आई रियली, यूर समवन जैसे मैं अगर अपना कंटेंट फॉर्मेट करता हूँ ना, मतलब आई यूजुअली फॉर्मेट माय कंटेंट वंस इन अ मंथ कि मैं Okay. क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को वो मतलब बहुत जरूरी है मेरे लिए. इफ आई फॉलो Okay. ओनली मीम पेजेस, मैं कभी भी अपनी नॉलेज एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा. योर Hmm. कंटेंट इज समथिंग जिसकी वजह से आप एजुकेट हो सकते हो. I would hope so. या सो अभी हु डू यू फील कि इंडिया में ठीक है ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअल में एक अच्छा कंटेंट पुट आउट कर रहे हैं? I'm the wrong person to ask because I don't follow anyone in fitness. A couple of people like Sanjay was so Sanjay, your fitness हम्म. coach. He also like हम्म. he ended up messaging me. I don't. One sec. So recently I have gone far back enough that this is the phone I use. ओके. Yeah, I use this phone just to post for like 1 hour a day or something now. So I ओके. have ओके. I have disconnected myself from social media because I want to focus on making videos. So हम्म. I'm the wrong person to ask. I don't follow any fitness influencer at all, or राइट. सो any influencer. वेयर डू यू गेट योर कंटेंट आइडियाज फ्रॉम कि मेरे को क्या बनाना चाहिए अभी? So one, there are many pieces. So earlier when I wasn't in this is a recent thing only. But earlier when हम्म. I wasn't, I used to occasionally come across fitness stuff because I don't follow fitness pages. I don't follow like on Coffee Shop. So I have a second account which I use. For Coffee Shop, I use only for my own stuff. Uspay I don't हम्म. do anything. And the spam account that I have, uspay I have fun. Uspay sirf memes hai, ye sab hai. Occasionally some health stuff comes up, and most ओके. of it that was all bodybuilding, big bicep, big chest. Yes, हम्म. it's all mainly that only. So I don't get any of my ideas from online. I हम्म. tend to many things that I learned. There's the bodybuilding side to it, and then there's the rest of the side to it. The हम्म. rest of this stuff is what I like because I was never interested in bodybuilding. राइट. So I was lucky that I never got into that field only to get introduced to people who will tell me कि अरे ऐसा करो वैसा करो big body and everything is done. So with me that didn't राइट. happen, and I got so I did what's it called, ESA, if you've heard of it, Exercise Science Academy, Bombay में जो है जहाँ पे ACSM हम्म. का training होता है. हम्म. So over there I was there, and there were many questions people used to ask me. I've done multiple courses over there. So वो सब से there was a lot of things that I knew पहले कि this is what people want to know, and then questions I also sometimes get. So I'm like अच्छा ये क्यों होता है, and then I tried getting on that too. So ओके. all these नाइस. ideas I try getting from stuff I'm learning. राइट. So there's a राइट. राइट. base amount I have learned, उसके ऊपर जो भी सीखना है, and then running के बारे में I make a bunch of stuff because that I have learned. I'm learning more and more every day. Diet is हम्म. one thing I try talking about more because diet may have a very simple philosophy, and exercise also my philosophy is very simple that I used to be someone who used to be like ये इतना सा भी नहीं खाना है. Nothing. My diet was like 100% calculated कि there's nothing bad going to go into my body. I did that very well for 2 years. Nothing ओके. is going to happen. Occasional cheat days which were planned properly. And I used to wake up at 4:30 a.m. I still wake up हम्म. at 4:30. But that time when I was there, it was so strict that even if I went to sleep at 3 a.m. for whatever reason, I'm going to be up at 4:30 and I'm going to go through my entire day.
I used to be that Yeah. strict with myself also, and then Right. So then eventually I came out of it. So उसके बाद okay. I realized okay, general people don't want to be that strict. Telling them कि इतना strict होना है is not going to work. Life is there to हम्म enjoy. So my philosophy is simple कि exercise करना है, yes करो, enjoy at the same time. Diet follow करना है, diet follow करो, साथ में enjoy. जो भी कर रहे हो, just enjoy along with that. राइट सो व्हाट डू यू डू फॉर योर एंजॉयमेंट? अगर एंजॉयमेंट की बात करते हैं, हाउ डू यू एंजॉय योर टाइम, जो शुभ टाइम होता है उसको? I have फ्रूटी? stuff like this around me all the fruity अभी खाखरा आगे पड़ा है. So if you've seen, I eat a lot of khakra. I ओके, love eating. हाँ. Love eating. So I eat when I properly eat every day. राइट सो Earlier व्हाट it used काइंड to ऑफ फूड be डू यू लाइक? खाकरा हो गया, फ्रूटी हो गया, अभी और कुछ ऐसा? जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ छोले भटूरे, ice प्रॉपर cream. नॉर्थ इंडियन वाले Hmm. आइसक्रीम्स. तो हाउ Ice cream is ऑफन the डू यू ईट number one. आइसक्रीम? So abhi I'm not eating, but abhi when my college ended, I had a 15-day break. So and हम्म yesterday only I went back active on social media again. इससे पहले I was just हम्म. having fun. I was enjoying a 15-day off. And उसमें every 2 days I finished one box of ice cream, which is a half a kilo box. Every two हम्म. days I ate one box. अरे दैट्स नाइस, Yeah, दैट्स so I नाइस. तो अच्छे से भर के अभी खाया. जब ये वीडियो ऊपर आएगा ना, सो whoever is watching, दिस इज द रियलिटी दैट वी हैव. अगर हम लोग नहीं डाल रहे सोशल मीडिया पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग खा नहीं रहे. राइट, वी माइट गो ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया, और हम लोग ना बहुत खाते हैं. मतलब आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट कि सर आपने कितने टाइम से चीट मील नहीं लिया? मतलब भाई कल ही Okay. छोले भटूरे खाए हैं, कल ही हाँ खाए यार. हैं. ठीक है. एंड आई पर्सनली डू फास्टिंग, मतलब मेरे को फास्टिंग ना सूट करता है. ठीक है, तो आई डू फास्टिंग, तो उसकी वजह से मेरे को और थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है कि आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट आई एम ईटिंग अंटिल एंड अनलेस माय प्रोटीन इनटेक इज कंप्लीटेड. Hmm. राइट, तो मेरे को उस चीज का एडवांटेज मिल जाता है. अब जो लोग मेरे को देख रहे हैं कि मैं बहुत फ्रीली खा रहा हूँ, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं यार तेरी खा के कैसे बन रही है. Yeah. और जो देख रहा है कि यार ये सुबह से लेके शाम तक भूखा रहता है, मतलब माय डे स्टार्ट्स एट अराउंड 6:30 7 AM इन द मॉर्निंग. Hmm. राइट, आई टेक ऑनलाइन सेशंस, तो 7 AM से शुरू हो जाता है. अभी फ्रॉम 7 AM टिल नाउ आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेक, आई हैव बीन ऑन रेगुलर कॉल्स एंड एवरीथिंग. बस मैंने Hmm. अभी कॉल से पहले, हमारे वाले इससे पहले, आई वेंट फॉर अ शावर, मैं नहा के तैयार होके, एंड आई जस्ट Hmm. सेट डिड द सेटअप, और अभी मैं बैठ गया हूँ. अब इसके बाद आई विल गो फॉर अ मील, कि मैं कुछ सोचूंगा कि हाँ मेरे को खाना है या कुछ ऐसा करना है, सो आई विल ईट फ्रीली, और ये चीज होती है. बट Hmm. people get inspired by this a very wrong way. उनको लगता है Yeah. कि भूखे रहना ही एक ऑप्शन है अगर आपको फिट होना है. Hmm. राइट, सो डू यू पुट आउट की these things कि when you go for a break, या when you go for these like, जैसे if you're having a fruity or you're Yeah. having khakra, so you put out khakra, but if you go out for ice creams and everything, do you put it out on social media So that often? last year, I went on this weight loss thing, wherein Mhm. what 9 months I lost some 12 kilos, and Okay. in the 9 months I shared every day at least 6 months of my diet. Beach mein there was a 1 month break I had taken, but other than Mhm. that, every day whatever I was eating, every day was there on Mhm. my story. And in the Right. beginning, the first 3 months or so, when the weight loss is the fastest, one of my Mhm. goals was to show that my diet remained exactly the same as before, just Mhm. quantities moved up and down here and there. Mhm. And for every single night, that time I went out of my way to every single night I used to eat some ice cream. And I used to share every single day that I'm eating ice cream. And I used to share my weight also every day. And So you I were made dropping and you were showing that कि खा के भी हो रहा है. Yeah, and that was a question I used to get ki ice cream kha ke how are you losing weight? And then I used to तो explain अभी it's फिर very simple. how did you tell them कि यार तुम भी कर सकते हो? Right, I showed because them. people have a tendency to understand कि if you want to lose weight, you have to punish your body. Yeah. Hmm. Right, so how do you actually make people understand कि ऐसा नहीं है? There's a So different approach to it. so I never actually wanted to share my diet every day. That wasn't ever my Mm-hmm. goal. But I started doing it for a few days to hold myself accountable. And I got Hmm. a very good response to it.
Very, very good response. That time I didn't even have many followers. This was just when I began. It's not even been a year since I started making videos online. So that time I didn't even have many followers or anything like that. I was just sharing it initially to hold myself accountable. कि अगर मैं share करूंगा तो मैं और नहीं खाऊंगा इसके बाद. हाँ. And I got such a good response to it that, oh, you are eating ice cream every day and yet you're losing weight. Oh, so every morning I used to have 2 toasts and 2 nice biscuits. And I used to dip that in my dad's chai. So every morning I used to put a photo that I had 2 nice biscuits and 2 toasts dipped in my dad's chai. And they are like, oh, you're trying to lose weight. How are you eating toast, biscuit, and ice cream at night? And still losing weight because I was sharing a graph every other week or so. Weight come ho raha hai mera. I started at some 84 or something and I came down to 72. So Okay. I shared that entire process. So for Right. me, how I ended up showing people is I literally did it and I showed it to them. Yeah, I ate ice cream whenever I wanted to. Like every night, I used to have 1, 2, 3 spoons of ice cream, sometimes an entire scoop. Every morning, I had my toast and biscuit. I eat regular khana, like absolutely regular food, sabji, dal, completely. Everything was very normal. Like Right. कोई भी इंडियन घर पे चले जाओ, यही खाना मिलेगा. हाँ. So I was Definitely. eating that only. And yet I was Right. losing weight properly. उसमें मैंने ice cream भी डाला. So the way I did that was just literally by showing everything. कि this is my diet and this is how I'm losing weight. It's working. It will definitely work for you. And I don't lose weight very easily. My body does not like changing its weight at all. Like it's been that since I was a kid. Like my body refuses to move. And yet I Right. managed to So, do it. अब why were you exactly cutting down weight? मतलब ये जो आपका sport है triathlon, does it require some kind of weight category? There's no weight category, but I was always a little overweight. I was very fit. I did my Right. Ironman also, but I did that when I was overweight. I was definitely a little overweight, a couple of kilos overweight. So I wanted to like cut down that fat anyways. And since I'm a kid, I have been a fat kid since I'm 3 months old. Like at 3 months, I used to look like a 1 year old baby because I was that big and fat. Oh, So since how I tall have are been, you? I'm now 6 feet. 6 feet. Right. So, अभी ना there is this one thing कि if you're into running, strength training शायद लोग neglect कर देते हैं. Cardio, if you're doing cardio, people neglect strength training. How often do you train for strength? या फिर weight training या resistance training किसी भी type का? How often you indulge your strength training into your routine? So it depends what phase of my season I'm into. So if I'm close to my Ironman, then Mm-hmm. my exercise and my diet is perfect. I won't move Hmm. at all. And that's for a short amount of time only. I don't do that for very long. But when I'm in off season, I'm having fun. I'm not that strict with myself. Hmm. So last 4 5 months have been pretty much off season because after I did Hmm. my entire weight loss thing, the weight loss thing I think got over in Feb. In Feb, my deficit ended. Hmm. So Feb के बाद March April I went off season. May में मेरा Hmm. exam था. My finals exam was there. Hmm. So then 3 months में I was just having fun. कुछ नहीं किया मजे किया मैंने. So I was Right. still cycling and running, but I wasn't that strict with anything that time. जब भी मन करा चले जाओ. So the Right. last 3 4 months have been completely off. But normally when I'm in my season, that time I try going to the gym at least twice a week and if Right. possible in that week thrice a week because the every other day I have to swim, cycle, or run. And three Right. sports you have to do extreme distances. Every day Right. you have to train for them. Right. So Right. that time I try going twice तो हो जाता है, thrice if possible. Right. So if someone is starting from scratch, let's say, right, for say it's me, it's about me. If I have to prepare for an Ironman tournament, the triathlon, how long will it take for me to get to the space of, where I can actually complete the entire thing? So Ironman also there are two Ironmans. One is a Hmm. 70.3, which is also called the half distance, and one is the Hmm. entire Hmm. 70.3, the ones I have done. Those are you can train for it if you train properly for it. 6 months when you can get there. Okay. 6 months, but So, proper training for 6 months, like full-fledged proper training for 6 months. right, right. So, usme, how far do you have to cycle or like run? Because I can't run. I run for barely 2 kilometers. Swimming is you start with swimming, that's 1.9 kilometers.
Then there is 90 kilometer cycling, and 90. then 90, and then 21 Okay. kilometers running. Okay. All Definitely these three not a back to thing back. for me. Definitely Yeah. not a thing for me. मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज, because I do cycle, but I cycle for around 20-21 kilometers, max to max at 25 kilometers. उसके ऊपर तो मतलब आई गेट कि यार ठीक है, बहुत हो गया, अब घर Hmm. चलो, इससे ज्यादा क्या ही करना है, Yeah. राइट? बट आई हैव, मतलब मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आई हैव अ गुड मेंटल एंड्योरेंस, क्योंकि when it comes to real life tasks तो थोड़ा सा I feel कि I'm tougher than other average people around me. Like for example, if we go for treks, right, I'm one of the people who would complete a trek in the shortest time possible. जैसे if you find out वैष्णो देवी की बात करते हैं, so वैष्णो देवी is around 12 kilometers trek, Okay. 11 to 12 kilometers. तो if I'm not responsible for taking someone with me कि मेरे को किसी को ऊपर लेके पहुंचना है, so I Hmm. would complete that in around 2 hours, ऊपर Okay. पहुंचना, राइट, एंड बैक, मतलब फिर तो दर्शन करने का जो भी 1-1.5 घंटा लगता है, एंड बैक इन 2 hours. Hmm. 2 hours बैक आने में तो 2 hours भी नहीं लगते, इट्स अराउंड 1 hour, क्योंकि वो तो भागते Okay. भागते 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 आप आ जाओगे, Hmm. राइट? बट आई हैव डन इट विद पीपल जो मतलब नहीं चढ़ सकते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट, ही फेल इल लास्ट टाइम वी वर क्लाइंबिंग अप, तो Hmm. उसको लेके भी मैंने ऊपर तक ट्रेवल किया है. सो आई फाइंड इट कि कहीं ना कहीं इफ यू आर नॉट इवन इनटू द प्रॉपर, जैसे आपका वाला स्पोर्ट है, बट कहीं ना कहीं एक मेंटल टफनेस वर्कआउट्स की वजह से, या फिर अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन देने के बाद, यू हैव अ बेटर सेल्फ इमेज एंड अ बेटर मेंटल गेम कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, 100%. Yeah. Yeah. राइट? मतलब Hmm. how have you felt other than this, other than your जो आयरन मैन है उससे अलग, वेयर डू यू फील कि यार यहाँ पे ठीक है, दिस थिंग इज हेल्पिंग मी आउट, कोई ऐसा एग्जांपल या कुछ भी ऐसा कि यू नो मेंटल टफनेस मेरी यहाँ पर प्रूव होती है? Uh, I would say that discipline is the I'm fairly disciplined. हम्म. I wake since what 5 years I've been 6 years now I've been waking up at 4:30 a.m. practically every morning, and I go to Don't you sleep by feel 9. sleep deprived after this? No, I sleep by 9:30. I get 7 to 8 hours minimum of sleep almost every day. Okay. So I that was one thing this which needed immense discipline for me to start. वो किया, हम्म. एंड देन सुबह Yes. 4:30 बजे उठ के भागने जाओ, साइकिल करो, ये सब करने में द स्किल आई डेवलप डूइंग दैट वाज डिसिप्लिन. Now, Right. in most cases, I can carry over the discipline and do something else. I was still in college, so I haven't really been that introduced to the outside world, job, वॉब, ये सब अभी तक मैं कुछ किया नहीं है. हम्म. I'm in college. So, Right. and I keep learning. I learn different things. So, इसमें it has of Right. course helped in many many different ways. Not uh, like for example, videos banana. If I have to make a video, if I have to stay up all night to make a video, I'm going to do it. Nothing doing. If I've decided कि आज video जाना है, रात के 2 भी हम्म. बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, I'm going to get that video out when I'm strict with Right. myself. But yeah, that's what I keep taking. So that way, whatever I have done, so the Ironmans, the 4:30 a.m., all of that, that definitely goes on to everything else I do. College का काम होता है, जब भी college का काम था, college का काम करना है, then करना है. Nothing is going to stop me from finishing the work now. Right. So that way it has transferred off very well की discipline एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छे से transfer हो गया. Like Coffee Shop also, when I started Coffee Shop, that हम्म. time the first time I pressed record on my camera, I was like shivering like that behind camera because I had dirty straight right. Like I can't Right. tell you how bad it was. Like my heart, I used to feel my heart in अरे my I can completely understand that when I did my first YouTube video ना, क्योंकि yeah, मैंने तो फिर भी ऐसी, मतलब क्या करता मैं लॉकडाउन में, YouTube हाँ, चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, सो एंड एट दैट टाइम क्योंकि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, इट वाज माइल्डली कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, राइट? इट स्टार्टेड इन मार्च, तो उस टाइम ठंड होती है हल्की सी. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, आई यूज्ड टू गो एट द
rooftop of my building for the workouts. I was working out on terrace and that was in sunlight. तो Hmm. उसकी वजह से मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया था काफी ज्यादा. Hmm. ठीक है, तो अभी इफ आई सी माई फर्स्ट वीडियो ना, इफ यू सी माई फर्स्ट वीडियो, कॉन्फिडेंस जीरो. Yeah. कैमरा देख के सच में ऐसा हो रहा था कि यार कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना बोल दूं, राइट. इफ यू Hmm. सी हाउ आई वाज लुकिंग, आई वाज जस्ट वेयरिंग अ शर्ट, पता नहीं कहीं से मैंने एक शर्ट ढूंढ लिया, वो पहन के आई जस्ट डिड द वीडियो कि ठीक है बस करने के लिए कर दिया, Yeah. राइट. बट वो एक अलग एक्सपीरियंस था. Hmm. उस टाइम पे आई डिड समथिंग, क्योंकि ठीक है मैं उतना माइट भी उतना सीरियसली नहीं कर रहा था उस चीज को, बस करने के लिए कर रहे थे तो कर लिया. Hmm. बट अब आई फील कि उसने कितना इम्पैक्ट करा है कि ठीक है, नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड टू स्पीक इन पब्लिक, आई हैव माय पॉइंटर्स. और क्योंकि उस Yeah. टाइम तो उतनी नॉलेज भी नहीं थी ना, नॉलेज तो पढ़ाई करने के बाद आई है, Hmm. राइट. हाँ, इससे मेरे को ये चीज लगती है कि डू यू फील कि फिटनेस जैसे सब्जेक्ट्स या वीडियो मेकिंग जैसे सब्जेक्ट्स एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होने चाहिए अब, when we are in this time ki jahan pe content creators or these things are the mainstream, this has become a mainstream profession for people. Hmm. As I told you, I am very anti-education, like formal Hmm. education. I love learning, Hmm. and I also found the formal education system something slowing me down and not letting me learn the way I wanted to learn. So Right. I do think a lot of things have to change in that. But yeah, health too, of course, should be a part of it. Health and finance. And by Hmm. finance, I don't mean like economics or whatever. I mean कि Hmm. खुद का tax return भरना होता है तो वो कैसे भरते हैं? Basic things हाँ. that you're going to have to do for the rest of your life. वो Right, तो so of do you course, file tax return, do you file yeah, tax yeah. return? I've been filing tax returns. So when I was 16, that time Hmm. I started taking group X classes. Hmm. एंड उसमें उनका जो इनकम आता था वो टैक्स डिडक्टेड इनकम नहीं आता था, टीडीएस लेके Hmm. वो भेजते थे. Okay. तो since that time, since I'm 16, I've been filing my taxes because I had to get my TDS returned. So उस टाइम से मेरे को सीखना पड़ा कैसे करते हैं वो सब. So अरे my dad नाइस. taught me, of course, my dad taught me everything. ये सब नहीं में I नहीं had सर, no idea क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, no idea. So he taught me all of that. I've But not that was, filed my tax return yet. अभी तक तो मैंने नहीं भरा है, but this year I feel that this economic year I'll have to file it out because I've got my firm registered. तो अच्छा, अब I guess थोड़े टाइम में जीएसटी वगैरह का भी आने लग अभी तो जाएगा. करना ही पड़ेगा, रजिस्टर हो गया हाँ. मतलब अभी तो करना ही पड़ेगा. हाँ, अब तो करना पड़ेगा. अब there is no stepping back from this, Yeah. right? So अभी if you get a chance to become either the education minister or the health minister of the country, what changes would you like to bring around in the infrastructure कि ठीक है ये चीजें तो मैं करके ही रहूंगा अगर मेरे को एक दिन के लिए भी बना देते हैं तो. That's a good question. Uh, first I would not want to be either of those people ever. I would not want to go into politics ever in my life. That राइट. aside, जस्ट that जस्ट aside, सपोज नायक वाला सीन हो जाए, यू आर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर, उसने बोला एक दिन के लिए बन के देखो, करके yeah, देखो, एंड फिर हाँ, यू बिकम वन. uh, education में तो I would want a lot of changes like the one I told you. Like for example, हम्म. अगर computer science करना है, then you should be tested on computer science कितना आता है, not हम्म. chemistry कितना आता है. So हम्म. changes like that wherever possible from my own experience. राइट. Second, I would ideally want to reduce cost of education and health in India. I would assume that India, being a poor country in general, would have cost is a big prohibition for most people to get healthier or get more educated. So I would राइट. think सो this would make the डू यू wider. थिंक पब्लिक जिम्स लाइक सेटिंग अप गवर्नमेंट जिम्स कि आप जहाँ पे जाके वर्कआउट कर सकते हो विल हेल्प? It's better than not doing anything. I will say that. But राइट. health में मतलब just giving infrastructure is a great first step. हम्म. Something can happen from that. Bombay में actually there are a couple of open gyms like that. There's हम्म. one in this place called Five Gardens. I've never been there, but there are multiple open gyms.
Park mein, they have put some weights with chains and everything, हाँ, and anyone can work out there. I saw that in a beer biceps video. Beer Bison, Five Gardens, the हाँ, same place we used to go to. So okay, वैसे there are a couple of them in India, in Bombay. right. So those places always have people. Abhi Lokhandwala mein also they have started this. There are these couple of machines. They're not Hmm, normal gym wale machines. They use your body weight, but you push chest press के लिए, and it just hmm. lifts your entire body up and down. Your body is the resistance वैसे. राइट राइट, नहीं A वो couple वाले of मशीन्स machines. तो यहाँ पर भी है, वी हैव दोज मशीन्स हियर. So that's of course better than nothing, but I think डेफिनेटली, that's still a small step वेरी स्मॉल to स्टेप. start something. It's a very small step. I would say nutrition and health in general थोड़ा सा और सिखाओगे school college में, then that would be more beneficial than just opening a gym. Right. But if I become any of these now, if I become an education minister, first of all, I feel that after eighth, I'll remove the class system. या मतलब स्टैंडर्ड्स वाला सिस्टम मैं हटा दूँ. मतलब जैसे okay, क्लास 8 के बाद क्लास 8 तक आई फील दैट क्लास टिल क्लास 8 इट इज द बेसिक नेसेसरी एजुकेशन दैट यू नीड, okay, right? But उसके बाद there are a lot of things that you study that will never benefit you in life. like For example, if you might have studied about amoeba, hmm, right? What benefit is it is doing to you in life right now? You don't have to deal with amoeba at any place, right? I know Rather what you than mean. that, let's say your sister, you wanted to learn, right? You wanted to learn computer science, so focus the subjects on the things कि ठीक है, if you are interested in learning computer science, we have levels of computer science now, Hmm. right? You learn these. When you feel that you've learned these, give an exam, pass through it, move to the different level. So I feel कि जिसका जिस चीज में interest है ना, it would be better for them to move around that. Hmm. और कुछ But how do कुछ you know basic interest? चीजें 8th standard में 9th standard में I didn't know मेरे को किस में interest है. yeah, that is something where you'll when you explore things ना. हाँ, but 9th standard का कौन सा बच्चा explore करने वाला है? यार सब एक्सप्लोर ही करते हैं. नाइन्थ स्टैंडर्ड में एवरीवन इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स. नाइन्थ स्टैंडर्ड में बच्चे को क्या बोलते हैं कि बच्चे के बिगड़ने की और बनने की उम्र क्या होती है? 14-15 साल की होती है. Hmm. बिकॉज दैट इज द टाइम योर माइंड इज एक्चुअली गोइंग टू इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, Hmm. right? You were 16 years old when you did the entire syllabus for 11th and 12th, Hmm. right? So if you go and explore for 2 years and you get to know कि आपका educational interest क्या है, आप क्या actual में सीखना चाहते हो, you can actually devote the next 2 years to learning it. I would say that is a better change. Helping people explore what they want to do. Right. Because if I'm talking about myself, in ninth, I Hmm. had no idea what I want to do in life. Zero, like zero. Right. If Maybe someone I would feel. have made me understand that, that would have been better for Hmm. me. Ki, okay, computer science is a thing, health is a thing, video Hmm. making is a thing, film making is a field. If I would have gotten to explore all of that, then I may have known better what I want to do. Who knows? Right. Right. So और दूसरा फिटनेस के फील्ड में ना आई वुड से कि देयर मस्ट बी, जैसे सरकारी स्कूल्स होते हैं ना, just hire few government trainers, Hmm. put them out, post them out into parks, post them out into societies. They're actually making people come and work out. Yeah. Employment बढ़ जाएगा. Hmm. दूसरा आई फील कि ज्यादा लोग अवेयर हो जाएंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट गोइंग टू द जिम, स्टार्ट गोइंग टू वॉक, स्टार्ट गोइंग फॉर ओपन फील्ड वर्कआउट्स, बट दे डोंट गेट एनी दिस कि आप एक्चुअल में वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है. Hmm. डेफिनेटली यू विल हैव टू बिल्ड अ सिस्टम कि जहाँ पे अटेंडेंस का हो, कि ट्रेनर एक्चुअल में जा रहा है. अभी इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स की तरह ना हो कि टीचर Yeah. घर पे बैठा है, वहां पे सारी हाजिरी लग रही है उसकी, Hmm. राइट? बट डेफिनेटली ये चीज एक हैविंग पब्लिक कोचेस, हैविंग गवर्नमेंट कोचेस to help out people would definitely bring out a revolutionary change into the fitness field, Definitely. Yeah. right? So would you be a volunteer for that if you ever get a chance? I don't know. I don't do personal training. Yeah, that's training is not what I do. I like making Right. videos. नहीं,
I was saying कि if you get a chance, for example, if you are an influencer, Hmm. ठीक है, tomorrow the government approaches you कि शुभ, we are planning to do this campaign in your society or in your area. Where do you put up in Mumbai? Andheri. Andheri. So let's say if they say that we are putting up this campaign in Andheri, and you'll have to take one class a week for next 8 weeks, and we'll try to make more people aware of fitness. Would you Hmm. like to go ahead for that? Yeah, possibly sounds good. Right? So this is something I feel ki, if we create a awareness about this ki, theek hai, we are taking out free sessions in the society, we are taking out free sessions for people around, and we build a community around that. Even Yeah. if we go for online sessions, I feel that more people would enjoy coming into it. And this not only on the fitness aspect of people's health, it would also help us with the business aspect of the trainers, that those will be Hmm. helping out people around that. Yeah. Right? So when it comes to you take classes, right? COVID से I haven't taken any. Since You COVID I ne- haven't taken any group classes नहीं. Personal training yes, group classes नहीं लिया COVID से. ठीक है, so how does it, like अभी how does it turn out for you? The personal training. फाइनेंशियली या, हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग या फाइनेंशियली या एक करियर बेसिस पे अगर हम लोग बोलते हैं, सो हाउ इज इट टर्निंग आउट फॉर यू? Uh, so when I was taking classes earlier, हम्म. that time I didn't know anything about finance. उस वक्त हम्म. my brain में my calculation used to work. This is true story. My gym used to be on the top floor of that mall, and bottom हम्म. floor में there was Star Bazaar, a हाँ. hypermarket. So what I used to do was कि I took a class. I'm like, chalo, हाँ. I just got 500 rupees for taking class. I हाँ. got 1,000 rupees today. I'll go हाँ. down, I'll buy these two juices. I will buy this thing to eat. I still have a राइट. profit of 400 rupees. राइट. That was the calculation in my mind. उस वक्त खर्चा क्या था? I was 16, 17. खर्चे में हाँ. उस वक्त खाना खाने का खर्चा था and I was a big foodie. So अरे after अभी भी every खाने पीने का ही खर्चा होता है, अभी कौन सा कुछ ज्यादा हाँ, खर्चा होगा? अभी ऐसे वीडियोस बनाने हैं तो वीडियोस के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कैमरा लेना हाँ. है, ये करना है, माइक व्हाटएवर अभी आर एक्सपेंसेस विल कीप इंक्रीजिंग अभी व्हेन यू आर राइट. 17 उस वक्त बिगेस्ट एक्सपेंसेस खाना खाना है मेरे को हाँ. ट्रू. I just want to eat and I was a big foodie still I'm a big foodie so my राइट. I went through the entire phase key whatever I earned all of that or most of that used to just go into food that is also when I was financially doing the best because I used to take there was a time I was taking 14 classes a week. Oh. So that time it was like peak earning for And me. it was 500 rupees a class? It was 1,000 a class. There were a 1000 a couple of class? different things, so 800 to 1200 ke beech mein, depending on where I was taking and what I was taking. Okay, so that was around 14,000 a week. Yeah, and then beech You mein there were was you also were you were basically earning more than a BTech engineer would earn. An average BTech engineer would earn after placement, yeah. right? After six years or 8 years of like studying, you were doing it Hmm. 8 years early, right? And you Yeah, must be doing very well right now also. I feel you must be doing well, better than that. yeah, better than that, but not up to where I want to be right now. Definitely, that is something that you'll grow towards, na? Yeah, yeah. So, do you ever try to take online trainings या कुछ ऐसा कि ठीक है, if someone comes to you that कि Shubh, I want to prepare for a triathlon, and if you can guide me online, if you can create programs for me online, and I can follow it up remotely, if like someone from West Mhm. Bengal or someone from North India approaches you, do you take that? I take only a couple of people. I don't do it with many people because I don't dedicate. I want to eventually possibly do that. Mm-hmm. Start taking plans and make that also one income method. But right now, I keep that to very few people because I'm not looking at it as a form of income particularly because I was still in college. I was still Right. learning and I'm still learning a lot of things. I'm learning filmmaking. I'm learning a lot of, and I'm doing the CS का course also. So right now, if I अच्छा. take on the responsibility कि 50 लोग का plan देना है, the money will Mm-hmm. definitely be fantastic. Never going to complain about getting more money, हाँ. but then I won't be able to learn whatever I still have to learn.
and rest of the Right. life पैसे तो बनाने ही बनाने हैं. Right. सीखना सबसे So, ज़्यादा अभी I can do right now. So I will right. eventually get into that. Right now I'm doing it in very, very small numbers. It's a handful of people. And then Okay. eventually I will think about forming an entire way of doing it. Right. 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 So if we talk about कि जैसे मतलब ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, how does CSCS differentiate you from मतलब एजुकेशन में क्या डिफरेंस है from personal trainers, the certified personal trainer and CSCS? How these two things are different in terms of education? What you are learning different here? Uh, so CSCS is far more advanced than. So I had given my ACSM ka. The first big exam I had given in health was ACSM. Hmm. Uske baad I did a couple of more, but the first big exam I gave was ACSM, and that Hmm. I passed fairly easily, and I got some around some 94% or something in that. So Okay. that went very well, and I personally found that course to be very beginner level. So I didn't think that it was enough for me to actually train properly because my goal was to train myself. My goal was never to Hmm. become a personal trainer. So I'm like, if Hmm. I want to train myself, this much knowledge is not enough for me. So I started doing Right. more things and I started learning more. And that's when I realized ki acha, learning more by yourself is more effective in my mind than doing a course. Because course Right. mein they bound you to a syllabus and you want to pass the exam. I have learned a Right. lot more learning myself. So I would say I'm not looking at CSCS as a way key. I want to differentiate myself from other trainers. It's more that I want to upskill even more to train myself primarily and to have the knowledge because health is something I'm deeply interested in. Of course, but Right. what I have heard and what I have learned about CSCS by till now is that that's the first course which seems like they are actually training you about personal training properly, about training people properly. It's in depth enough that you will actually have knowledge that matters. Because when you have to train an athlete, for example, a proper athlete, like a tennis player tomorrow, then Right. tennis is a every sport is very complicated that when kya movement body karta hai. So in Hmm. CSS, you will learn the nitty gritties that actually matter for an elite player to go into a whole new level. You can take a Right. person at a mid level and take them to the elite level. You will get the knowledge to do that. Right. 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 So it's more about performance-based things, right? CSCS is purely like performance and yeah, it's conditioning, right? So it's you're Right. just taking an already great player to a whole new level. That is Hmm. CSCS. They teach you like small movements. कि tennis में ये move है. So how can I Hmm. make this more efficient, more better? What could go wrong? उसमें feet का training कैसे करेंगे? So all that you will start thinking that way when you do CSCS, as opposed to Hmm. चलो bicep के 4 सेट मारो, chest के 3 सेट मारो, and back के 2 सेट मारो, body बन जाएगा. It's Ah, far away from that. It's it's far away completely in a from different that. category. That is the Right. So, differentiator. okay. एक पता नहीं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कहाँ से आया. What is the funniest fitness advice that you might have heard of over internet these days? Uh, what have you heard recently? मेरे को तो बहुत कुछ मिल जाता है. मतलब I have a lot of teenagers texting me. One of I covered this in my last video also. One of my he follows me from a long time and he asked me a lot of doubts. He told me that उसको जिम में बोला है कि अगर आप रनिंग करते हुए if you're not wearing a supporter, sorry रनिंग नहीं लेग्स करते हुए लेग्स मारते हुए if you're not wearing a supporter, the size of your penis would decrease, Nice. right? Okay. I hear about कौन से सीजन में वेट लॉस ज्यादा होएगा ये सब हाँ. this is what I find quite funny सीजन में कब होएगा then there are these people who teach this neck exercise or jaw हम्म. exercise कि हाँ उससे हाँ belly हाँ. fat कम होगा और this ये जो जो weird ऐसे एक्सरसाइज से बेली फैट कम होएगा. हाँ I've seen videos like this. Not many, but I have come across videos कि अच्छा jaw का exercise करेंगे and they make हाँ. some weird connection कि oh the jaw is connected to the belly and some I
ऐसी सब चीजें I've बहुत never सुनी heard हैं। of this thing. I've never heard of आज this thing. अभी हम बात किए ना, अभी इंस्टाग्राम दिखा देगा। हाँ, सुन रहा है ना साइड में बैठा हुआ सब सारा सब कुछ। सुन सब सुन रहा है, वो अभी आएगा वीडियो कॉल। चलो, I'll be waiting for this. I मतलब कभी-कभी मेरा मन करता है ना just to rip down these people in the comment section कि भाई बताओ मेरे को इसका, मेरे को लॉजिक बताओ what पर फिर मैं सोचता हूँ कि यार people who are looking at this, they don't even want to know the reality. They're just here to see the things that they want to see. They don't want to see the reality कि सच में क्या या राइट। ऐसे ही एक हाइट का बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। यस, हाइट हाइट इज सो हाइट, कॉमन। ये करने से हाइट ग्रो हो जाएगा, ये कैप्सूल खाने से हाइट ग्रो हो जाएगा, दिन में उठक राइट। बैठक 10 बार करो, हाइट कम होएगा। उल्टा हाँ, लटक जाओ पोल से, हाइट बढ़ जाएगा। अभी एक मतलब ये फिटनेस के रिलेटेड नहीं है, बट आई केम अक्रॉस दिस वीडियो ऐसा करके, उसने एक चम्मच में थोड़े से सरसों के तेल में लौंग आता है ना, लौंग, उसको डाल के वो गरम कर रहा है और फिर बोल रहा है कि ऐसे अपनी चहीती लड़की का नाम लो तो वो लड़की तुम्हारे वश में हो जाएगी। हाँ, तो यस। मैं अब ये देख के ना ऐसा लगता है कि यार, और लोग इसे भी तो देख रहे होंगे ना यार, हाँ, of course, many of these videos लोग get millions and millions and millions of मिलियंस views. एंड मिलियंस ऑफ व्यूज। और फिर जब मैं अपना वीडियो देखता हूँ ना यार, कि यार ठीक है, यू टोल्ड एक्चुअली समथिंग वैल्यूएबल, अब तेरी Yeah, वीडियो पे 10,000 व्यूज नहीं हो पा रहे पूरे, और yeah, इस बंदे की वीडियोस पे जो चम्मच पकड़ के खड़ा है हाथ में और लड़की का नाम लेना सिखा रहा है, इसकी वीडियो पे तेरे 10 मिलियन व्यूज है। फिर मेरा हाँ, मन करता है कि यार कई बार ना एक काम करता हूँ, क्वालिटी कंटेंट बाद में बना लेंगे, अभी ऐसा ही बनाना शुरू कर देता हूँ yeah. कि ये वाला पानी पीने से होगा आपका वजन कम, देखिए 10 महीने में कैसे घटाएं वजन। Yeah, वो तो that's a everyday story with creators who want to make good stuff. कि you see सर इतना घटिया सामान is getting millions of views. हम्म। Like ये, हाँ, ये चम्मच में इसका नाम लेके पी लो और लड़की पट जाएगी, हाँ, मतलब if that gets 10 million views, then हम क्यों इधर बैठ के बना रहे हैं videos? अच्छा, इससे ही दिस कौन सा नाम है, अरे देयर इज दिस ब्रांड लाइक एमवे ना, हाँ, कौन, एक तो एमवे हो गया, एमवे इज डिफरेंट, एक हेल्दी करके कुछ है, वो I हर्बल don't know. लाइफ, हर्बल लाइफ। Herbalife, I've heard of it. I don't know anything about it. हाँ, सो व्हाट दे डू इज कि अभी आई रिसेंटली केम अक्रॉस ऑफ दिस कि हर्बल लाइफ में ना दे आस्क यू टू बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। व्हाट दिल डू इज दिल अटेंड अ ग्रुप, यू दिल गिव यू लिंक टू अ ग्रुप क्लास जिसको आप रोज ज्वाइन कर सकते हो। उस पे वो लोग कार्डियो करवा रहे हैं, दे मेक यू डू जुम्बा एंड एवरीथिंग, नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जीरो स्ट्रेंथ Hmm. ट्रेनिंग, और दे गिव यू अ स्टफ ऑफ बॉक्स ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ 20,000 वर्थ 20,000, राइट, जिसके अंदर प्रोटीन पाउडर्स हैं, सारी चीज है। एंड हेल्दीफाई मी यूज कर, वो सॉरी हेल्दीफाई मी नहीं, हर्बल लाइफ यूज करने वाला बंदा सिर्फ यही चीज खा रहा है सुबह से शाम तक। सो आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस केस जहां पे वो सुबह से लेके शाम तक रोटी नहीं खा रहे हैं, दिन के 4 Hmm. टाइम प्रोटीन शेक्स पीना है, Okay. 2 टाइम ये वाला मील रिप्लेसमेंट ये खाना है, ये वाली गोलियां खानी है। सो जो ये सप्लीमेंट कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा Hmm. सप्लीमेंट बुरे हैं, बट people go to the gym and they are sold hundreds and hundreds, thousands of worth supplements, Hmm. needless supplements, right? Yeah, yeah. So, what supplements do you feel are necessary for a person to take in today's lifestyle? कि ये supplement होना चाहिए, ये वाला बेकार है यूज करना। I would say protein like for general population, protein हम्म। powder low. हम्म। Practically everything else can be eliminated for most people, for a good number of people. Abhi India mein the trend is that D3 is one which is quite low, and हम्म। then B12 is another one which is quite low. हम्म। In Indian population, that's a very common thing happening over here. राइट। And so I would say कि see whatever statistics you find, उसमें जो भी हम्म। सबसे ज़्यादा common problems है, last 2-3 years का trend has been D3 and B12. हम्म। So then prescribe that. Whatever, you should take that then. Other than that, I don't think most people need BCAA लेना है, उसके बाद
whatever CLA जो भी होता है, I don't even know half of them अभी only. हुआ ना मेरे साथ एक केस हुआ पीछे, मेरे को एक हरिद्वार में मेरे को एक मिले पर्सन मिले, एक्स पर्सन, उनको उनके ट्रेनर ने 25,000 का सप्लीमेंट्स बेच दिया फॉर अ मंथ, फॉर 1 क्या सप्लीमेंट, क्या सप्लीमेंट बेच खा सकते हो एक महीने में? BCAA, CLA, कार्निटीन, क्रेटीन सब चला दिया, सब जो चीज सप्लीमेंट आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है सब चीज उनके पास थी। वाओ। द पॉइंट, द रियल फैक्ट इज कि BCAA और क्रेटीन दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों सर्विंग कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वाली चीजें, दोनों एक साथ चल रही है। प्री वर्कआउट में क्रेटीन चल रहा है, पोस्ट वर्कआउट में क्रेटीन चल रहा है, एंड बीच में इंट्रा वर्कआउट BCAA चल रहा है। चलो क्यों नहीं, राइट। करो करो। अभी बात ये है कि अभी इनसे कोई पूछ लेना, मैं ट्रेनर से भी पूछता हूँ ना कि आपने BCAA क्यों चलवाया, कहता मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा। मैं फिर क्रेटीन क्यों चलवाया, कहता उससे साइज बढ़ता है। फंक्शन क्या करते हैं ये बॉडी में जाके वो किसी को भी नहीं पता, बस सप्लीमेंट बेचना दुकान चलाने वाली बात है। राइट। तो यू गेट अक्रॉस दीस पीपल जिनको ऐसे करके ठगा जाता है या कुछ भी ऐसे। या मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में होके सप्लीमेंट इज लाइक द बिगेस्ट थिंग ओनली ना। Fitness industry हाँ, works on supplements, so everyone wants to take her every other some very common question jo I get asked is BCAA and what's the other one? uh, you said one of them, I forgot which one. क्रेटीन, कार्निटीन। No, carnitine is another one which they keep asking, L-carnitine. And एल then that's a very कार्निटीन। common question कि मैं L-carnitine लूंगा तो मेरा ये फैट लॉस हो जाएगा क्या? मैं BCAA लूंगा तो मेरे मसल ब्रेक नहीं होंगे ना? The very राइट, common question. राइट। सो So those who are watching, BCAA and L-carnitine only work if you're working out in fasted state, राइट। तभी BCAA का काम तो सिर्फ तभी है अगर आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट कर रहे हो, वरना आपको BCAA लेने की जरूरत नहीं है। राइट। I आई don't know होप about यू रिलेट। I don't know about the fasted state अगर इस वक्त चाहिए रहता है, I'm not aware of that. नहीं, because it's like if you're going for a prolonged workout in a fasted state, definitely you'll tend to lose muscle. Also, in case you want to maintain your muscle mass, right? जैसे in your case you don't aim to maintain that much of muscle mass, right? When you come from 84 kgs to 72 kgs, you're not looking to lose that much of muscle mass, like maintain that much of muscle mass. You must No, I be mean, willing ki I practically maintained all my muscle. I actually gained strength in this time. I gained a substantial amount of strength in this time. 12 right? किलो लूज And करने did के you साथ। use BCAA? Yeah, and Not any other supplement? Whey protein did you use? हाँ, वे प्रोटीन तो I was having every day without fail. हाँ। So BCAA no, never. so ऐसा ऐसा कभी बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करवाया उसके बीच में? No. तो कोविड का टाइम नहीं, था, आई कहाँ पे करा था? हाँ जी। कोविड का टाइम था, कहाँ पे करा था? अच्छा, हाँ, ये भी बात सही है। नहीं, बिकॉज इफ यू गेन स्ट्रेंथ डेफिनेटली यू माइट हैव पुट ऑन सम अमाउंट ऑफ मसल, Yeah, possibly. राइट। सो बिना इन चीजों के भी चीजें हो रही हैं और लोग यकीन करने को तैयार नहीं है। When I did True. my first transformation, no one was willing to trust me that I did not use any kind of steroids throughout the journey. They don't मतलब ऐसे कर देते हैं कि बता नहीं रहा है, सामान चलाया। Yeah. So I feel very bad about that कि यार मतलब नेचुरल लोगों को भी ठीक है, देयर माइट बी पीपल हु आर विलिंग टू यूज स्टेरॉइड्स फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर देयर रिस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस, बट जरूरी नहीं है ना कि हर कोई कर रहा है, Yeah, of course. राइट। चलो फिर आई गेस आज का तो हम लोग एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ टू टॉक अबाउट, Yeah, love the राइट। conversation. any final point or any final message that you would like to deliver to the audience कि ठीक है ये चीज होनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा? If it sounds too good to be true, it is.
It is Yeah, if it too sounds good to too be good true. to be true, it is too good to हाँ be true. नहीं होने वाला है. हाँ, point. सही बात है, बिल्कुल. Yes, so this was काफी शुभ. If you are willing to follow him on Instagram, he puts out really great content. I get very educated from his content. Guys, you can follow him on Instagram. The username must be, flashing out somewhere here in the bottom. And he's a personal trainer. He is an athlete, triathlon athlete. So anyone looking for prepare for such kind of events, running, trekking, cycling, some kind of events, he's the one to you can go to and ask out your questions and queries. He'll be able to help you out the best way possible. Right? Thank you so much for coming aboard, Shubh. I'll be inviting you soon to another episode to just Yes, answer please. queries or something. I would say let's plan an episode. I did one recently about the myths. Let's plan an episode somewhere in the next month where we can actually take on the stupid advices that are coming on from the people to grow or to use this kind of supplementation या कुछ भी ऐसा. राइट कुछ ऐसा Yeah. स्टुपिडिटी जो इंटरनेट पे चल रही है अराउंड फिटनेस विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू सच रील्स या कुछ भी ना मैं ऐसा सेव करके रखूंगा यू आल्सो कीप सेव जैसे ये नेक एक्सरसाइजेस से बेली फैट कम होने वाली एक्सरसाइज वीडियोस हैं you can save them and I'll also try to save few of them and let's see what we can Done. find out and we'll react to them right and Done. also put out the basic logic कि उसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्या क्यों ये चीज गलत है Done. Sounds क्या good. क्यों नहीं फॉलो right all right thank you Yeah. for coming aboard right and it Thanks was for great inviting talking to me. you yeah I'll see you next time Done. Yeah. bye buddy have a nice day You too. Bye.